so that you can pay for your second year of tuition fee. Right. $1200 से ऊपर नहीं कमा पाते. Students will take other people's jobs because they are getting to work 40 hours. Hey guys, welcome back to our channel. As you guys might already know, but let me say it out. Now international students can work more than 20 hours. This is great news. And today we'll be talking about the pros, the cons, the watchouts, as we also show you our house that's gonna be ready in March. So let's get started. तो जो गाड़ी के वाइपर हैं वो हो चुके हैं ख़राब. नॉर्मली साल में एक बार चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे स्नो पड़ती है, तो स्नो की वजह से यहाँ पे वाइपर जल्दी ख़राब होते हैं. प्लस यहाँ पे जो सोल्यूशन डलता है एंटी फ्रीज वाला जो होता है, उससे भी वाइपर जल्दी ख़राब होते हैं, हार्ड हो जाते हैं वाइपर जो होते हैं, मोस्टली बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर. तो यहाँ पे हर साल चेंज कराने पड़ते हैं और मैंने 2 साल में एक बार भी चेंज नहीं कराया, तो इस बार चेंज कराने हैं वाइपर ताकि बढ़िया हो स्नो इस बार. So the immigration minister announced कि November 15, 2022 से लेकर December 31, 2023 तक ये पायलट प्रोग्राम चलाया उन्होंने, जहाँ पे 500,000 students, international students, will be able to work more than 20 hours per week. And one of the reasons that they have cited why they have done this is because there is so much labor shortage right now, and ज़्यादातर unskilled labor shortage है. And when I say unskilled, it's basically skilled labor but trades के अंदर यहाँ पे shortage ज़्यादा है, laborers की कमी है, construction में कमी है. Plus in IT also there's a little bit of shortage. And what used to happen was, and this is again बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं इसके बारे में, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीज़ें बोली हैं, कुछ प्रोज बताए हैं, कुछ कॉन्स बताए हैं. बट वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स व्हाई द गवर्नमेंट इज डूइंग दिस इज बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड द लेबर शॉर्टेज. इट्स जस्ट क्वाड्रुपलिंग ऑल द प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये घर की बात करूँ तो घर के अंदर यू हैव शॉर्टेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स, यू हैव शॉर्टेज ऑफ लेबर, यू हैव शॉर्टेज ऑफ कारपेंटर्स, प्लस यू हैव ऑल दैट इन्फ्लेशन जिससे मटीरियल कॉस्ट जो है वो ऊपर है, लेबर शॉर्टेज की वजह से लेबर कॉस्ट ऊपर है, एंड ऑल दीज बिल्डर्स आर नॉट एबल टू सस्टेन. एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस a lot of times on Grow with Nav channel, and this is one of the small examples of why they have implemented this step. Yes. But let's talk about the pros and the cons. पहले बात करते हैं pros की. There will be more income coming to each student, which is actually very very great. Now उनकी options open हो जाती है, because having a limit of working 20 hours, आपके पास सिर्फ वो 20 घंटे जिसमें आप काम कर सकते हो, right? $1200 से ऊपर नहीं कमा पाते. And then people also resort to cash income और वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, right? So I think that's another. As an elder sibling of 2 people who are students right now, I am really glad that they got this opportunity, because it's gonna really help them make some savings अपने लिए. They can earn more and spend more as well, and Plus save more. Plus it's very important to realize that कई लोग यहाँ पे 2 years के लिए आते हैं, बट 1 साल की ही जो फीस होती है, जो ट्यूशन फीस होती है, वो फिगर्ड आउट होती है. GIC एक होता है, बट नाउ यू कैन एक्चुअली सेव द एंटायर GIC and you will be able to save a little bit more so that you can pay for your second year of tuition fee. It will be a lot easier. पहले बहुत ज़्यादा हासिल करनी पड़ती थी. So तो ये तो थे सारे pros, but let's talk about little cons as well, जो बहुत लोग बात कर रहे हैं. Alright. चश्मा गिर गया. यहाँ पे पता नहीं क्यों कीड़ा आ गया है. Anyways, तो जी घर जो है वो यहाँ से 1 2 तीसरा घर है, एंड काफ़ी ज़्यादा रेडी हो चुका है. ब्रिक्स वगैरह लग चुकी हैं. ऊपर थोड़ा सा एक पार्ट बचा हुआ है. ये वाले घर के भी साइड्स जो हैं, दिस इज़ बेसिकली सेमी डिटैच्ड, तो कॉर्नर टाउन हाउस बोलते हैं इसको. एंड ड्राई वॉल अंदर लग चुके हैं. मैं थोड़ा पास नहीं जा रहा बिकॉज यहाँ पे काम चल रहा है और यहाँ पे ना सर्वेलेंस हो रही है, तो हम अगर बीच में जाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है. और यहाँ पे क्या है कि ड्राई वॉलिंग शुरू हो चुकी है. मैंने देखा अंदर ड्राई वॉल्स लगी हुई थी. हमारा वाला दरवाज़ा बंद था, ये वाला दरवाजे सारे लग चुके हैं. HVAC का काम चल रहा है. आई थिंक प्रोपेन गैस सिलेंडर दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, तो HVAC और गैस का और वो सब जितना भी काम जाम होता है वो सब चल रहा है अभी मेरे ख्याल से. बट इट्स प्रीटी गुड. आई थिंक 2 मार्च को मिल जाएगा. द गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे जो घर है सामने,
वो वाले घर भी ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं, सो दैट्स प्रॉब्ली अ गुड थिंग. Let's talk about little cons as well, जो बहुत लोग बात कर रहे हैं. Number one is कि employers will now exploit these students because उनको अब cheap labor मिल रही है. फॉर लॉन्गर, राइट? बट मेरे हिसाब से दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई CRS स्कोर्स, देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कमिंग इन देयर मिड 30s, अर्ली 30s, हु हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. तो जो एक्सप्लॉयटेशन वाला पॉइंट है, आई डोंट थिंक पीपल हु विल वांट टू be exploited will be exploited, right? I think we need to take steps, and हम थोड़ी देर में बात करेंगे what you can do to do that, but we need to be very careful that if you're working for a company at $15 an hour right now for 20 hours, you now can work longer at a higher wage. So don't just settle for a minimum wage job now. You don't have to always work with Tim Hortons now. There are other companies who would want to get students at slightly cheaper cost than a full-time employee, but still I think that's something that we'll have to make a conscious effort of as a student, to not get bogged down with a low-paying job for 40 hours, 60 hours, 80 hours just because we can. Number two con is कि studies will suffer. अगर 40 घंटे हम हफ्ते में काम ही करें तो पढ़ाई का टाइम कैसे मिलेगा? एंड मेरे को ये लगता है बिल्कुल भी कौन नहीं है. आई strongly disagree. Now, if you are coming here, to become a dentist, if you are coming here to become a lawyer, then probably it's true because it's a skilled, highly licensed, profession. But if you're coming here to do project management course, if you're coming here for cybersecurity, I'm not saying all these courses are wrong, but it gives you an opportunity. This 40 hours per week gives you an opportunity to meet new people, to network more, to go out there, to, earn more, that we talked about in the pros. I think the pros are way more than this small con that you'll have less studies. I don't think that's a con, to be honest. Let me give an example. अब जैसे for example, some courses are difficult for someone. ये personal to person, depend करता है. But having that 20-hour limit, like even like a slight increase, कि अगर 30 hours काम करो तो you're getting more income, but your studies will not suffer. तो आपको एक वो balance बनाना पड़ेगा as a student. Correct. And I think जब हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो सिर्फ पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आओगे तो यू विल एक्चुअली सफ़र लॉन्ग टर्म. आई थिंक आई हैव ऑलवेज सेड दैट यू नीड टू नेटवर्क, you need to talk to people, you need to go out there, you need to talk to startups, and if you do all that, and now you can do that legally, you will actually thrive a lot better when your studies are done. And I think this con, I don't think it's a con. I think it's a good thing that you're getting more time to go out there. One of the other sentiment, critical sentiment जो चल रहा है कि students will take other people's jobs because they are getting to work 40 hours. And I think that's a good thing because that actually generates competition. If students are able to take other people's job, then it's other people's job to actually upskill themselves and make sure that that doesn't happen. I think it's an equal playground now. I thought it was very unfair for students to be able to work only 20 hours per week when their overall curriculum actually allowed them to work more. I think this has made a level playing field, and now they can compete with everyone else who is actually allowed to work full time if you are a PR. Yes, students. बहुत सारी आवाज़ आ रही है, बट पीछे से भी बन चुका है, सारी ईंटें लग चुकी हैं. वो क्या होते हैं, वाइनल बोलते हैं, वाइनल भी लग चुकी है, शिंगल्स भी लग चुकी हैं, एंड ड्राई वॉलिंग स्टार्ट हो गई है. ये So now let's talk about watchouts. As an international student, आपको different तरीके से सोचना पड़ेगा. So the number one thing is just don't go just for minimum wage jobs, because you are coming. Some people are come here with an experience. आप अपने 30s में हो. Just now you're getting an opportunity to have other jobs as well, and not just a minimum wage job, which I think is very good. Plus, it's very important to upskill yourself right now. Now, a lot of people, when they join my FJ program, there are very few students who join. And जो students join करते हैं, वो भी वो वाले होते हैं जो अभी जॉब में full time जाने वाले हैं, उनका PGWP आ चुका है. They are actually getting work permits and now they are going into jobs. I think that upskilling is now required even before you are coming on student visa, so that you can use all that knowledge of creating a good resume, networking on LinkedIn, to get a full-time job while you are studying as well. So we need to think a little bit differently. It's not just about working full-time at Tim Hortons and McDonald's right now. It's about reaching out to these startups, reaching out to these big companies, because they will also open their doors to students because it makes sense. Instead of hiring someone at $30, $40 an hour, they can get someone at $25 an hour, and that could be you as an international student.
And then transition to getting that full-time job would also be easier for that company also 100%. and for you. Already working 40 hours per week. You can just continue to do that, and that will just accelerate your journey towards buying a house, buying a car, just settling yourself down, getting married, whatever you want to do, pay off your student debt. All that will be accelerated. Yo, what's up? तो सुंदर हो रहा है फॉल का पेड़. ये रहा हमारा फ्यूचर पार्क. ये यहाँ पे सिमरन जो है वो झूले झूलेगी, और वहाँ पे ना बास्केटबॉल कोर्ट भी है, और यहाँ पे ये वाले ना कॉन्डोज भी हैं. तो हीथवुड नहीं बनाए हैं ये वाले कॉन्डोज. दीज आर ऑल्सो प्रीटी गुड. 2 बेडरूम है ये, कुछ 3 बेडरूम भी है. और ये रहा चिल्ड्रंस पार्क. यहाँ पे एक चीज़ जो मेरे को दिख रही है वो ना अच्छे से इन्होंने मेंटेन नहीं कर रखा, काफ़ी ख़राब मेंटेन करा हुआ है. यहाँ पे अगर कुछ ना हुआ ना तो बाई गॉड मैं बता रहा हूँ, इतने इंडियंस हैं यहाँ पे बनेगा क्रिकेट ग्राउंड, और यहाँ पे खेलेंगे हम क्रिकेट. क्या बोलती है? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ना अगर कोई मतलब कुछ ना हुआ यहाँ पे तो इसको क्रिकेट ग्राउंड बना देंगे. सही बात है ना? वाह 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 वाह. एक जो चीज़ थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस करी थी अबाउट स्टार्टअप्स, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू चेंज इज हाउ वी रीच आउट टू दी स्टार्टअप फाउंडर्स. द बिगेस्ट एडवांटेज यू हैव विद स्टार्टअप्स इज यू कैन एक्चुअली रीच आउट ऑन लिंक्डइन टू दी स्टार्टअप्स, एंड you need to upskill yourself in how to reach out to them. You can't just ask for a job, you need to contribute towards them. So you can either use these 40 hours per week to work 2 jobs, one in Tim Hortons and one in McDonald's, or you can use that extra time to work and contribute towards the startup, so that your journey towards getting a full-time job in that startup becomes a lot better. And in startups you actually get to learn a lot many things a lot faster, and that would again accelerate your journey towards getting a high-paying job once your studies are over. So startup, reaching out to them, it's really important now more than ever. You will find a link in the description below जिसके अंदर सारा इस डिटेल के बारे में, इस न्यूज़ के बारे में सारी डिटेल्स है. And make sure that you are eligible to apply for a 40-hour per week or a more than 20 hours per week job. Don't do anything that's not legal for you, right? So that's where the link will come in handy. The other thing is that there are a lot of critics who are talking about this not being a good step. I don't agree to them, because I think this will, again, like I said, it will put students on a level playing field with everyone else who is doing a job. This is a really good move. Yes, कुछ कॉन्स होते हैं हर एक मूव के, इसके भी हो सकता है हूँ, बट इट्स अ पायलट प्रोग्राम, दैट्स द रीजन व्हाई. बट आई रियली बिलीव दैट दिस इज गोना वर्क, एंड फॉर गुड स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली, एंड आई एम नॉट सेइंग गुड स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, बट स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली कमिंग हियर विद एक्सपीरियंस, इट विल जस्ट पुट देम many steps ahead and not put them behind, which normally used to happen when you're coming as a student in your 30s. That's all we have for today. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.